Hello students, welcome to Krishnas Maths. This is the fourth video of differentiation. या पूर्व तीनटा वीडियो अपलोड हो सारी तीनटा चैप्टर रो डिटरमिनेंट मैट्राइजेशन प्रोबेबिलिटी डिफरेंशिएशन रो चारटा वीडियो अपलोड कला पर आमे जिबा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव देन इंटीग्रेशन देन डेफिनाइट इंटीग्रेशन देन एरिया अंडर द कर्व देन डिफरेंशियल इक्वेशन तापर वेक्टर को आसीबा ए फॉर्म रे आमे चालछु जदी के वीडियो रे नुआ रे आछंती वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देबा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके यार पीडीएफ को डाउनलोड कर। So let's start with the video. The first question is write the derivative of mod of x minus 3 when x less than 3. तो ए क्वेश्चन रे कौन करिवे mod x रे डेफिनेशन देखिए. What is mod x? Mod x equal to plus x when x is greater than equal to 0 and equal to minus x when x less than 0. Mod x will be equal to plus x. जब x रो वैल्यू कौन हो 0 रो अधिका आउ 0 रो कम हेले minus x हो. Now ये जो फंक्शन दिया है आपन को लेट दिस विल बी इक्वल टू y इक्वल टू mod of x minus 3 ये 3 रे 0 होबो या 3 रु आगो गले ये प्लस होबो जतले ये 3 टू तळ को पळासियो दिस विल बी x minus 3 only when x is greater than or equal to 3 and this is equal to minus of x minus 3 when x less than 3 now since given x less than 3 so y is equal to minus of x minus 3 since x is less than 3 or you can say 3 minus x this is y अब आपको डिफरेंशिएट कर दूं तो dy by dx equal 3 रो डेरिवेटिव 0 minus x को डेरिवेटिव 1 तो 0 minus 1 will be equal to minus 1 so ये आपन का आंसर बुझियला सेकंड dy by dx equal to dy by dx when sin xy plus x square y is equal to e raised to x given sin of xy plus x square y. This is an implicit function. या को implicit function बोलते हैं. Implicit function बाद there are functions in which one variable cannot be expressed in the form of other. Differentiate कर दियो तो. Differentiating with respect to x. Derivative of sin xy will be equal to cos of xy. Now derivative of xy. First function y रो derivative होचे dy by dx plus second function into x रो derivative 1 plus this is again u into v. First function x square y रो derivative dy by dx. Second function y x square रो derivative 2x equal to e raised to x. Now look, this is cos xy into x into dy by dx plus y into cos of xy plus x square into dy by dx plus 2xy is equal to e raised to x. So ये टर्म और ये दुईटा टर्म जब उतरे dy by dx कॉमन नहीं जीवा dy by dx को so x into cos of xy plus x square दुईटा जब कौन कॉमन असला dy by dx राइट साइड नहीं जीवा रिमेनिंग टर्म को दिस इज e raised to x ए टर्म रे dy by dx नहीं तो आपको राइट साइड नहीं जीवा cos of xy दिस इज द टर्म ये 3 भी dy by dx नहीं आपको भी राइट साइड नहीं जीवा 2xy so dy by dx is equal to e raised to x minus y into cos of xy minus 2xy divided by x into cos of xy plus x square. So this is the answer. Implicit function direct derivative करिए dy by dx वाला टर्म को कलेक्ट करके लेफ्ट हैंड साइड में रखिए बाकी रिमेनिंग टर्म को राइट साइड नहीं तापर dy by dx आने पे dy by dx जो कोएफिशिएंट अछि सेठी जे राइट साइड रे डिवाइड कर दो राइट. Next one is what is the derivative of sin x degree? So derivative of sin x degree with respect to dx. तो differentiation रो formula apply सेते बेले हबो जेतोले डिग्री रेडियन रे कन्वर्ट हियो तो डिग्री को रेडियन रे कन्वर्ट केंति करिए मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 100 पाई बाय 180 ना when you multiply any angle by pi by 180 you will get the function which is in the form of radian. Now this is sin x. So the derivative of sin x will be cos x into pi by 180. Now the derivative of x into pi by 180 is the derivative of x is 1 into constant is your pi by 180. Now cos of x into pi by 180 again can be written as cos degree. Radian करते ले 1 by 180 degree convert करते हो तो into pi by 180. So ये आपका आंसर बुझियला तो एक मार्क क्वेश्चन सरला. Now come to the 4 mark question. 4 mark question कौन होस देखो. 4 mark question is differentiate y is equal to sin y raised to sin 2x. तो फंक्शन raised to function रो पावर रा उडे फंक्शन कोन करिवा log नै जिवा
taking log on both sides. So log y equal to log रो जो पावर अच्छे sin 2x ये jump करके आगे पड़ा छो. So this is sin y. That is by the property of logarithm. Now differentiating with respect to x. Differentiating with respect log y रो derivative 1 by y into y रो derivative dy by dx. Right side is in the form of u by v. So this is sin 2x into derivative of log of sin y is 1 by sin y. Derivative of sin y will be cos y. Derivative of y will be dy by dx. केते तरह चेन रूल अप्लाई होला तीन थर log of sin y 1 upon sin y रो derivative cos y रो derivative dy by dx plus log of sin y into sin 2x रो derivative is cos 2x into 2x रो derivative 2. Now this term and this term, these are the two terms containing dy by dx. So this is 1 by y. ये देखो cos y divided by sin y cot y हेगला लेफ्ट हैंड साइड आसी गला sin 2x into cot y बन गला into dy by dx equal to right side कौन कौन गला right side अच्छी log of sin y into 2 into cos 2x एति गछ right side आउ को टर्म को right side नेबा only गोटे टर्म अछि therefore dy by dx equal to log of sin y and cos x 2 cos 2x divided by dy by dx रो कोएफिशिएंट ये पूरा टर्म का लेफ्ट साइड आसी जो. So this is 1 by y minus sin 2x into cot y. So this is your answer. Correct? Came in 2008 18 तीन वर्ष पूर्व क्वेश्चन कहीं ना गोटे वर्ष एग्जाम हेनी तीन वर्ष कंसीडर करी चल. Now this is the next question. So the question is log of this is equal to this, then dy by dx equal to this. तो डिफरेंशिएट कर देबा दोनों साइड. Differentiating both sides with respect to x. Differentiating both sides with respect to x. Log of x square plus y square. Differentiation is 1 upon x square plus y square. Derivative of x square is 2x. Y square का derivative 2y dy by dx equal to 2 constant. Tan inverse y by x. So 1 by y by x का square which is y square by x square into d by dx of y by x. Right? So this is 2 common काट देवे a 2 को साथ cancel कर देवे. So this is x upon x square plus y square plus y into dy by dx divided by x square plus y square equal to this is x square divided by x square plus y square into derivative v square हेगला x into y रो derivative dy by dx minus y into x रो derivative 1. Now this x square plus y square from all gets cancelled. This is x plus y into dy by dx is equal to this x square and this x square also will get cancelled. This is x into dy by dx minus y. Now one side will become x plus y and the other side will become x minus y into dy by dx. So unit dy by dx na. So dy by dx is equal to x plus y divided by x minus y. So this is your answer. Done. तो एमती वीडियो मु नहीं आसबी डिफरेंशिएशन रो सब गोटे गोटे चैप्टर मु नहीं आसबी. राइट? जदि कोई के वीडियो देखछन मते कमेंट करी कि कहबे आपन मैथमेटिक्स एग्जाम को डेट रे अछि. When is your mathematics exam? Accordingly I will plan. बेसी रु बेसी वीडियो आने चेष्टा करबी. राइट? आउ ऑलमोस्ट सब चैप्टर को कवर करियो चेष्टा करबी. जदि चैनल के नुआ अछन चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देबे. और प्लीज मते कमेंट करी कहबे when is your mathematics exam of Odisha board, so that I will plan accordingly. आ आपनकर कोन अलगा क्वेरी अछि तो कमेंट सेक्शन रे करियो. चैप्टर बुझी होछि चैप्टर बुझी होनी आ कोन अलगा क्वेश्चन रो सॉल्यूशन हम दरकार जहां भी अछि व्हाटएवर इट इज यू गिव मी इन कमेंट सेक्शन so that I will come with efficient solutions. चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देबे आ सांग मान पाखु पहुंचबे. चैनल को रीच मिलियो आपण मानकर मते भलो. राइट? पढुतांतु नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो नै कि आसबी और सहित पे गुड लक.